हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का 5th लेक्चर लेके आए हैं और ये लेक्चर हमारे सॉलिड स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि हमने बोला था कि एट एवरी लास्ट लेक्चर ऑफ ईच लेवल वी विल गिव पीडीएफ नोट्स। ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो आप वहां से सारे सॉलिड स्टेट के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम सॉलिड स्टेट क्लास 12 स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट we will start with solid state entrance exam series and we will cover all entrance exam for this. And students, with the help of our content, I am very much sure that you can crack any question of solid state in any exam. So I encourage all of you to see all videos and to see entrance exam series also. तो चलो हम लोग start करते हैं with today's class. So students, in our previous lectures we have covered introduction, then types, classification, crystal structure, unit cell, close packing, void, packing efficiency, density. Now in today's class we will do defects, electrical properties and magnetic properties. So students, before starting today's lecture, first we will do the problem which we have given in the last class. Okay, so बोलता है calculate the number of unit cells present in 1 gram of gold and it crystallizes in FCC structure. अभी देखो बच्चों, अगर gold crystallizes in FCC structure तो उसका number of atoms कितना रहेगा? 4 रहेगा ना। तो देखो mass of gold कितना दिया? 1 ग्राम। उसका atomic mass कितना है? 197 ना। तो mass of 1 mole of gold कितना रहेगा बच्चों? 197 ग्राम रहेगा ना। So number of atoms present in 197 grams of gold. See, 197 grams of gold means what? 1 mole of gold. Correct? So number of atoms present in 197 grams of gold will be equal to Avogadro's number. समझा? So number of atoms present in 1 gram of gold will be this much. Correct? So इस मतलब बच्चों 197 ग्राम में अगर Na number of atoms है तो 1 ग्राम में कितना रहेगा? Let's say x. करेक्ट? हमने क्या सिखाया था? इधर एक लाइन बनाने का, इधर एक लाइन बनाने का और बीच में इक्वल टू का साइन बनाने का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। therefore x will be equal to Na into 1 upon 197. समझा? कैसे करना है ये? वही तो किया ना। तो therefore we know that in FCC unit cell, one unit cell has 4 atoms. करेक्ट? सो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट विल बी, सो देखो एक यूनिट सेल में 4 एटम्स है, तो इतने एटम्स कितने यूनिट सेल में रहेंगे? तो दिस डिवाइड बाय 4, दैट्स योर आंसर। समझा? सो स्टूडेंट्स, लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। बोल रहे कि द एलिमेंट हैज बीसीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट हैज गॉट एज लेंथ 288 पिकोमीटर and how many number of unit cell and number of atoms are present in 200 grams of element and density दिया है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन डेटा। करेक्ट? द एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो z इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे ना। तो 288 पिकोमीटर है ना, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया 288 into 10⁻10 सेंटीमीटर, राइट? सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ एटम्स present in x grams of element क्या रहेगा? x into z upon rho into a cube. So number of atoms in 200 grams of element क्या रहेगा? 200 into 2 upon 7.2 into 288 into 10⁻10 the whole cube, right? उसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना एटम्स आता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना। समझा? इस तरह से करना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं with today's class. Let us begin with imperfections or defects in solids. So the deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called as defects. Okay, so defects are classified into two categories: point defect and line defect. Okay, so defects are created during the process of crystallization and imperfections are more if crystallization occurs at faster rate. Okay, याद रखना ये, it's very very important. If you carry out crystallization process at faster rate, then that solid will introduce large number of defects.
So ideal crystal without any defects are possible only at absolute zero. Okay, above this temperature, no crystalline materials are 100% pure. They always contains some defects. याद रखना students. Next, whatever be the nature of defect, the electron neutrality of solid is always maintained. This is very important. So, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं with point defects. देखो बच्चों, when any deviations or irregularities exist from an ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, then that defect is called as point defect. मतलब अगर across one point or across one atom if there is a deviation, then that defect is point defect. Name only is indicating now. So point defects are classified into three types. पहला है stoichiometric defect, then non-stoichiometric defect and impurity defect. So now let us start with stoichiometric defects. If the imperfections in a crystal are such that the ratio between cations and anions remains the same as represented by the molecular formula, that is, the stoichiometry of solid is not disturbed, and such type of defect is called as stoichiometric defect. Okay, so the stoichiometric defects are also known as intrinsic defect or thermodynamic defects. Right? There are of two types. First one is vacancy defect. Vacancy defect मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब लैटिस पॉइंट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बैठे हैं, तो कुछ लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गायब है एंड वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. समझा? When in a crystalline substance some of the lattice sites are vacant and then the crystal is said to have vacancy defect. It is generally arises due to absorption of heat from the surrounding, and hence this defect is known as thermodynamic defect. Okay. Now, due to the absence of particles, the mass of substance decreases, but volume remains same. As a result, density of substance decreases. बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम हुआ कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम हुआ तो मास कम हो जाएगा, राइट? एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम, करेक्ट ना? तो डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो अगर मास कम हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो डेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा ना. तो वैकेंसी डिफेक्ट विल डिक्रीज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. समझा? Next, second type of defect is called as interstitial defect. So देखो, when some extra constituent particles are present in the interstitial sites, then the crystal is said to have interstitial defect. This defect occurs in two ways. So students देखो, ये हमारे सारे लैटिस पॉइंट पे constituent particles attached है. ये जो बीच वाला जो स्पेस है वो empty है ना, उस empty स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उस एम्प्टी स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है तो उस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. So interstitial defect occurs in two ways. पहला है an extra particle occupies an empty interstitial space in a crystal structure and this extra particle is same as those present at lattice point, and the extra particle increases mass without the changing volume and hence density will increase because volume same रह रहा है. समझा? This is one way. Now second way, suppose ये हमारे सारे constituent particles है lattice point के ऊपर attached है, तो एक constituent particle अपना जगह छोड़ के interstitial space occupy कर रहा है and यहाँ पे vacancy create हो रही है, correct? That means here the constituent particle is occupying the interstitial space and creates vacancy here. So an extra particle gets shifted from its original lattice point and it occupies the interstitial space in a crystal, and as no other particle is added or no particle is lost, so density will remain same. समझा? तो interstitial defect दो तरह से हम लोग कर सकते हैं. Now
Students, remember that the vacancy and interstitial defects are shown by non-ionic compounds. Okay. Now, what type of defects are shown by ionic compounds? Let us discuss. So, ionic compounds shows following type of defects. First one is Schottky defect and second one is a Frenkel defect. तो बच्चों, ये Schottky defect and Frenkel defect analogous है vacancy defect and interstitial defects. Vacancy defect and interstitial defects are shown by non-ionic compounds and Schottky defect and Frenkel defects are shown by ionic compounds. समझा? तो सपोज ये अपना आयनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है, कैटायन एनायन, करेक्ट ना? नाउ एज कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायन, ऑलवेज रिमेंबर दैट कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. सो देखो स्टूडेंट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट. सो इन स्कॉटकी डिफेक्ट द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स एंड क्रिएटिंग वैकेंसी ओवर देयर. ओके. Now this is called as stoichiometric defect because stoichiometry of compound is maintained. जितना कैटायन मिसिंग है उतना ही एनायन मिसिंग है. Now यहाँ पे क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट में? यूजुअली कैटायन अपना लैटिस साइड छोड़ता है और वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है और वो कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है. So first point क्या है? It is due to the equal number of cations and anions missing from their lattice points. And Frenkel defect क्या होता है? It is due to the missing of ions, usually cations, from lattice sites and occupies the interstitial sites. समझा? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे. So this results in decrease in density of crystal. देखो cations and anions missing है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? Density कम होगा. पर यहाँ पे there is no effect on density of crystal. समझा? Third point, this type of defect is found in the ionic compounds with the high coordination number and small difference between the size of cations and anions. And this type of defect is found in the ionic compounds with low coordination number and the large difference in the size of cations and anions. समझा? The number of missing cations and anions is equal, hence the electrical neutrality is maintained. So electrical neutrality is maintained because equal number of cations and anions are there. तो इसके एग्जांपल्स है NaCl, AgBr, Kc. इसके एग्जांपल है AgBr, AgCl, AgI and CF. So students should remember here that the AgBr is a crystal which shows both defect. This is very very important. So AgBr shows both Schottky as well as Frenkel defect. This is very important point about Ag. समझा? So students, now we understand the Schottky defect, how Schottky defect produced in NaCl. तो स्टूडेंट्स, ये एनिमेशन का क्रेडिट है chemtube3d.com. ये साइट बहुत अच्छा है, इसमें केमिस्ट्री के लगभग सारे एनिमेशन है. सो इस साइट का हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे, तो आप लोग वो भी देख सकते. तो देखो बच्चों, ये मान लो हमारा NaCl का स्ट्रक्चर. ये जो ग्रीन एटम्स है, ये ग्रीन एटम्स है अपने Na+ है और जो ब्लू वाले है वो Cl-. ये NaCl स्ट्रक्चर होता है. ये NaCl का स्ट्रक्चर हम डिटेल में सीखेंगे जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करेंगे. सो देखो उसमें इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है. देखो ये Na+ Cl- मिसिंग है. Equal number of cations and anions are missing and creating vacancy over here, right? So this type of defect we called as Schottky defect. Now as ions are missing, then mass will decrease. This is all about the Schottky. I hope you understood this. Now you will see Frenkel defect in AgCl. These atoms are Ag+ and these atoms are Cl-. ठीक है, तो ये अपना AgCl का स्ट्रक्चर है. उसमें क्या हो रहा है? यूजुअली कैटायन जो होता है वो अपना लैटिस साइड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है. देखो, तो यहाँ पे Ag+ आयन इज ऑक्यूपाइंग ए टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? देखो ऊपर दो नीचे, समझा? दिस इज द फ्रेंकल डिफेक्ट इन AgCl. एंड देखो ये है अपना डिफेक्ट, ये अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, इफ imperfections are such that the ratio of cations to the anions becomes different
from that indicated by the ideal chemical formula, then this type of defects are known as non-stoichiometric defects. ठीक है, so देखो these defects are results in either excess of metal ions or deficiency of metal ions. So पहला हम लोग देखते हैं metal excess defect. This type of defect occurs in either of the following ways. फर्स्ट है बाय एनाइन वैकेंसी. देखो बच्चों, एनाइन की वैकेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, मेटल ज्यादा रहेगा ना, मतलब कैटायन ज्यादा रहेगा. सो दैट विल बी अगेन मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, लीविंग ए होल व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, thereby maintaining the electrical balance, and these sites containing the electrons thus trapped by the anion vacancies because they are responsible for imparting color to the crystals. F मतलब क्या होता है? F stands for Farbe, which is a German word for color. तो देखो, मान लो ये अपना NaCl का स्ट्रक्चर, तो ये मान लो ये anion है, ये cation. Suppose one anion is missing from the lattice point or lattice site. So here vacancy is created. That vacancy is filled by electron. Okay, so electron is trapped in a anion vacancy, and this is called as F center. F मतलब Farbe, and this will impart color to the crystal. Understood? So देखो, so example के तरफ हमने NaCl लिया है. When NaCl is heated in the atmosphere of sodium vapor, the excess of sodium atoms deposit on the surface of NaCl crystal. Means we have solid NaCl and we are heating that NaCl in the atmosphere of sodium vapors. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो excess of sodium atoms है, that will get deposited on the surface of NaCl, right? So after that what happens, Cl minus ions then diffuse to the surface where they combine with the sodium atoms and which becomes ionized by losing the electrons. Means देखो, surface के ऊपर सोडियम है, अब ये सोडियम एटम्स कहाँ पे आया, सोडियम वेपर से आया. ओके, नाउ जो Cl माइनस आयंस था वो डिफ्यूज हो गया सरफेस पे, करेक्ट. तो ये Na एटम्स है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na एटम्स क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा ना. तो ध्यान से सुनो, दिस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज बैक इनटू द क्रिस्टल एंड दैट ऑक्युपाइज द वैकेंट साइट्स क्रिएटेड बाय Cl माइनस आयंस. तो Na प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा, NaCl बना देगा. So this electrons absorb the energy from the white light and that gives yellow color to NaCl. Yeah? So Na plus Cl minus will give you NaCl plus इलेक्ट्रॉन. ये सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस बन गया, ये Na प्लस और ये Cl माइनस क्या बन गया, NaCl. ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे anion वैकेंसी में आके बैठ गया, and this is very very important to give color to the compound, and this will give yellow color to NaCl. This is the concept. So metal excess defect can be produced by the presence of an extra cations in the interstitial sites. Okay. Electrical neutrality is maintained by electron present in another interstitial site. Example, when ZNO is heated, it loses oxygen and it turns yellow due to the following reaction. Let's say ZNO की reaction. If you heat ZNO, it gives Zn plus 2 plus half O2 and gives 2 electrons. Correct? देखो, ये Zn जो है और ये जो 2 electrons जो है दूसरे interstitial space में जाके बैठ. Correct? So one cation is occupying one interstitial space and electrons will occupy other interstitial space so that all electron neutrality is maintained. Such type of defect is called as metal excess defect. Yeah? Again, it is a non-stoichiometric defect. So, excess of zinc plus 2 ions are trapped into the vacant interstitial sites and the electron occupies the neighboring interstitial, as I said. Then formula of ZnO will become Zn 1 plus X and O1. Okay, extra cations. Now we will do metal deficiency defect. Okay. This defect is possible only compounds of metal which shows variable oxidation states. Now variable oxidation states are shown by only transition metals or we say D block metals. This defect usually occurs due to the missing of cations from its lattice side and the presence of cation having higher charge in their lattice. जैसे कि देखो, ये NiO की lattice है. Now NiO में निकेल is having plus 2 charge, करेक्ट. तो हुआ ये कि ये जो निकेल plus 2 था इसके बदले मान लो plus 3 आ गया,
यहाँ पे निकल +2 था, इधर आ गया +3, बिकॉज निकल +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा ना, तो ये +3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे चार्ज 1 से बढ़ गया, करेक्ट ना, यहाँ पे भी चार्ज 1 से बढ़ गया, तो टोटल चार्ज कितने से बढ़ गया, यहाँ पे +1 से बढ़ गया, यहाँ पे +1 से बढ़ गया, तो टोटल +2 से बढ़ गया ना। इसके लिए चार्ज बैलेंस करने के लिए एक कैटायन को मिस होना पड़ेगा, correct? So as this cation is missing to maintain the electrical neutrality, correct? So this creates vacancy over here. So it is a deficiency of metal, no? So it's a metal deficiency defect in NiO. Now metal deficiency defect has been occurred because this Ni is showing variable valency, right? +2 के बदले उसने क्या दिखाया, +3 दिखाया, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आयंस मिसिंग है ये, सो इन कंपाउंड NiO, one Ni+2 ion is missing, which is creating vacancy at its lattice site. The deficiency of 2 positive charge is made up by presence of 2 Ni+3 ions present at the other sides of Ni+2 ions. Understood? This is the metal deficiency defect. Then the formula of compound will become like this. So Ni has reduced. Now in this composition, remember students that we will have Ni in +2 state as well as Ni in +3 states. Some of Ni are in +2, some of them are in +3, right? And the total charge of Ni +2 and +3 will be equal to total charge of O. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो आज का लेक्चर्स में भी हम लोग ये न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. Okay, so now we will see impurity defect. So it arises when foreign atoms, that is atoms different from host atoms, are present in crystal lattice. So the regular atoms are displaced from their lattice by impurity atoms. There are two kinds of impurity defects are there. पहला है, in this defect the foreign atoms are found at the lattice sites in the place of host atoms. मतलब देखो क्या होता है, मान लो ये है अपना कॉपर, ये सारे कॉपर एटम्स. So if you are introducing the impurity of zinc, then zinc will occupy the lattice site of copper. So this impurity defect, and ये usually alloys में होता है. देखो बच्चों, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है कि नहीं, ये जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, राइट? फॉरेन एटम जो है वो होस्ट एटम का लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट ऑक्यूपाई करता है. दिस इज द वन काइंड ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट. दिस इज द एग्जांपल इज alloys. So solid solutions of metal, that is called as alloys. So in brass is a alloy of copper and zinc, and in brass host copper atoms are replaced by the impurity of zinc atoms. Now we will see impurity defect produced from alloyvalent impurity. Alloyvalent impurity means the element with oxidation state different. Okay, मतलब जो impurity हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका oxidation state और हमारा host है उसका oxidation state क्या रहेगा, अलग रहेगा. Because of addition of alloyvalent impurity, vacancy gets created. So impurity with different oxidation state than the host constituent particles. जैसे यहाँ पे Na का चार्ज क्या है, +1 है, तो हमने इंप्यूरिटी डाल दी Sr+2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो कैसा होता है, one atom of Sr+2 will replace 2 Na+ because to maintain electron neutrality, right? So as 2 Na+ ions will miss, that will create two vacancies, and out of those two vacancies, one vacancy will be filled by Sr+2 and other lattice site of Na+ will be unoccupied, right? So here impurity is occupying lattice site of constituent atom. So when a small amount of SrCl2 is added to NaCl during its crystallization, then the added Sr+2 ion whose oxidation state क्या है, +2, occupies some of the regular sites of Na+ host ions, right? So in order to maintain electrical neutrality, every Sr+2 ion removes 2 Na+ ions. One of the vacant sites are created by removal of Na+ ions is occupied by one Sr+2 ions, and another site will remain vacant. Yeah? So students, now we will start with electrical properties of solids. Now based on this, solids are classified into three categories: conductors,
सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हमने ऐसे 3 कंपैरेटिव मैनर में समराइज किया है। दैट विल मेक यू वेरी इजी टू रिमेंबर द टॉपिक, राइट। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं विद डेफिनेशन। द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज नोन एज कंडक्टर, right? The substance which has poor electrical conductance at low temperature but higher conductance at high temperature is known as semiconductor. The substance which cannot conduct heat and electricity under any condition is known as insulator. This is the definition. Next, energy bands. There is no energy difference or very less energy difference in between valence band and the conduction band. The energy difference between the valence band and conduction band is small. Now, energy difference between valence band and conduction is very large for insulator. Electronic arrangement. There are free electrons in the conduction bands, and the electrons can be excited from valence band to conduction bands in case of semiconductor, right? Now, insulators mein there are no free electrons in conduction band, and electrons cannot be excited from valence band to conduction band. The variation of conductivity with temperature. The conductance will decrease with increase in temperature for conductor. याद रखना. Now, conductance will increase with increase in temperature. This will remember. Because जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे, वैसे वैसे electrons क्या होगा? Excite होगा from valence band to conduction band. That will increase the conductivity. Now, insulators has no effect of temperature. Right? So देखो, ये याद रखना है. Conductivity of conductors. Conductivity का units ohm inverse, meter inverse. Right? Conductivity of conductors is in the range of 10 to the power 4 to 10 raised to 7. Semiconductors का 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4. And insulator का 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10. Very less conductivity. Okay? So, energy band. Now, in case of metals, let's say ये valence band है, ये conduction band है. They are overlapping, right? Valence band and conduction band are overlapping. There is no energy gap in case of metals. That's why we call them as conductors. Now, in case of semiconductor, there is a small energy gap between the valence band and conduction band. Students, ये valence band है और ये conduction band. जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट होता है, तब वो कंडक्ट करता है. बट इन केस ऑफ मेटल, एज दे आर partially filled or overlapping, they can easily conduct. Okay. Now, in case of semiconductors, there is a small energy gap between valence band and the conduction. तो अगर इलेक्ट्रॉन कैपेबल है ये बैंड से ये बैंड तक एक्साइट करने के लिए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. अगर सपोज इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं है ये बैंड से ये बैंड में जाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. इसके लिए सेमीकंडक्टर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सम केसेस, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अनदर केसेस. बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना आसान हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है. इसके लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. नाउ इन केस ऑफ इंसुलेटर, दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो लार्ज एनर्जी गैप, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन जोन. That's why they will never conduct electricity or heat. Examples: metals, copper है, Fe है, then ionic solids such as NaCl, KCl, है ना, और alloys, silicon and germanium are examples of semiconductors. Plastic, wood, sulfur, phosphorus, these are the examples of insulators. Now we will see semiconductors. The pure semiconductor material which has very low but finite electrical conductivity known as intrinsic semiconductors. The electrical conductivity of semiconductors increases with increasing temperature because the number of electrons with sufficient energy so as to get promoted to the conduction band will increase as temperature increases. अभी बताएंगे. Okay? Semiconductors are insulators at low temperature and they are conductors at high temperatures. Right? The conductivity of semiconductors can be increased by doping. Doping क्या होता है? It is a process of addition of minute quantity of impurities to a semiconductor to increase its conductivity. The added impurity is known as dopant. Understood? A doped semiconductor
having higher conductivity than pure intrinsic semiconductor is known as extrinsic semiconductor. See, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं इंट्रिंसिक। अभी इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने डोपिंग किया मतलब क्या, एक इंप्योरिटी डाल दिया, उसकी वजह से क्या होगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उस सेमीकंडक्टर को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। So there are two types of extrinsic semiconductors are there, N-type semiconductors and P-type semiconductors. So in N-type semiconductors, majority charge carriers are electrons. In P-type, majority charge carriers are holes. I mean N-type semiconductor, minority charge carriers are holes, and P-type, minority charge carriers are electrons. Okay. Now in case of N-type semiconductor, we add electron-rich impurities because majority charge carriers क्या है बच्चों, electrons. Now in case of P-type semiconductors, we add electron deficient impurity. Now electron rich impurity मतलब क्या? We add group 15 element. So silicon is a semiconductor is doped with phosphorus, which is group 15 element, pentavalent impurity. तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, राइट ना। देखो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, तो ये फास्फोरस ये सिलिकॉन को चिपका है ना, ये फास्फोरस इसको चिपका है, इसको चिपका है, इसको चिपका है। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए ना। देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं। दिस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन. So the resultant semiconductor, resultant extrinsic semiconductor is known as N-type semiconductors. Now we will move to the P-type semiconductors. Silicon, which is again semiconductor, is doped with the electron deficient impurities, that is trivalent impurity, that is group 13 impurity. देखो यहाँ पे बोरान ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, लेकिन ये सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बोरान के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, so that is hole, that is no electron. Hole means no electron. So here majority charge carriers are holes. And the resultant extrinsic semiconductors is known as P-type semiconductors. Now we will do magnetic properties of solids. So देखो सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कवर किया है. So देखो पहला है diamagnetic. Diamagnetic means what? They are repelled weakly in magnetic field, and such a solids have only paired electrons. So type of solids in which all electrons are paired are known as diamagnetic. See like this, clockwise, anti-clockwise, है ना, plus or minus. So example है benzene, NaCl, TiO2, B2O4. ये याद रखना है. अब paramagnetic. So paramagnetic substances, they have unpaired electrons and they are weakly attracted in the magnetic field and they cannot be permanently magnetized. Presence of unpaired electron will make substance paramagnetic. If all electrons are paired, then that is diamagnetic. याद हो जाएगा. Example है O2, BO, CuO, TiO. Yeah. Then ferromagnetic. Ferromagnetic, these are they also have unpaired electrons and they are strongly attracted in the magnetic field. Such solids can be permanently magnetized, and on heating to a temperature called as Curie point, these solids change to the paramagnetic solids. See, ferromagnetic is the extreme case of paramagnetism. See, paramagnetic substance में भी unpaired electrons होते हैं, ferromagnetic में भी होते हैं, but paramagnetics are weakly attracted in the magnetic field, whereas ferromagnetics are strongly attracted in a magnetic field. Okay, now this is a representation of their magnetic alignment. ये Fe, nickel, cobalt, CrO2, these are the examples. Now anti-ferromagnetic, ठीक है, anti-ferromagnetic है, anti-ferromagnetic. So in these solids, unpaired electrons align themselves in such a way that resultant magnetic moment is zero. Means there are unpaired electrons, but these unpaired electrons align themselves in such a way that their magnetic moment will get cancelled. So resultant magnetic moment will become zero. So Cr2O3, CO, cobalt oxide, है ना, Fe2O3, these are the examples. Then ferrimagnetic, unpaired electrons align themselves in such way that there is a net magnetic moment. देखो ये clockwise है, ये दोनों anti clockwise, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये दोनों भी कैंसिल हो गए ना, राइट ना. देन ये बच रहा है, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये बच रहा है. Means electrons are aligning in such way that some of the magnetic moment get cancelled, but net magnetic moment is there,
that is called as ferrimagnetic. This is Fe3O or 4. Okay. Now we will do very important numericals based on this. Okay. देखो, if NaCl is doped with 10 raised to minus 3 mole percentage of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? So देखो बच्चों, given data, NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole percentage of SrCl2. What does it imply? It implies that 100 moles of NaCl is doped with 10 to the power minus 3 moles of SrCl2. Mole percentage का meaning ही वही है ना, correct? तो as each Sr plus 2 ion introduce one cation vacancy, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, right? दो वैकेंसी क्रिएट करेगा, एक खुद Sr plus 2 ऑक्यूपाई करेगा, तो नेट कितना वैकेंसी क्रिएट होगा? वन वैकेंसी क्रिएट होगा. Therefore, number of cation vacancy produced per mole of NaCl will be number of Sr plus 2 ions added per mole of NaCl. तो कितने ऐड किया रे? 10 raised to minus 5 मोल ना, करेक्ट? उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, that will give you the number of Sr plus 2 ions. That is nothing but the cation vacancy. Yeah? So therefore, concentration of cation vacancy will be 6.022 into 10 raised to 18 per mole of NaCl. समझा? This is the very important number. So students, let me tell you one point that this numerical has been asked in BARC exam. अभी देखते हैं. A composition of sample of wustite is Fe 0.93O1. What percentage of Fe is present in plus 3? Okay. तो देखो बच्चों, कहना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, करेक्ट ना? The composition is Fe 0.93 and O1 instead of FeO because of some Fe plus 2 ions are replaced by Fe plus 3 ions. So पहला given data लिखेंगे. Formula Fe 0.93O1 implies that 93 Fe atoms are combined with 100 O atoms, right ना? तो ये रेशियो क्या है? 0.93:1. तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 93 and 100, right? So out of 93 Fe atom, let us assume that there are x Fe plus 3 atoms. Therefore, Fe plus 2 कितना रहेगा? 93 minus x. So as compound is neutral, because हमने सीखा है कि कोई भी डिफेक्ट होने दो, electron neutrality is always maintained, right? So therefore, total charge of Fe plus 2 and Fe plus 3 will be equal to total charge of O2 minus, right? तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे. यहाँ पे Fe plus 2 के ऊपर चार्ज कितना है? 2 into Fe plus 2 ions. अभी Fe plus 2 ions कितना है? 2 into 93 minus x ना, और ये 3 into x, that is equal to 2 into 100. And therefore, on solving, we will get x equal to 14. But x क्या है बच्चों? X is number of Fe plus 3 ions. Therefore, number of Fe plus 3 ions will be x. Number of Fe plus 2 ions will be what? 93 minus x will be 93 minus 14. That is 79. Right? So therefore, percentage of Fe plus 3 will be 14 into 100 divided by 93, because total कितने हैं? 93 है. This 50. Obviously, Fe plus 2 कितना रहेगा? 85. So students, आज के लिए बस इतना ही. आज हमारा कॉलेज स्टेट का क्लास 12 स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का सीरीज खत्म हो गया है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद exercise numericals of state board as well as NCERT exam. After that, we will do our very important series, that is entrance exam series for solid state, and we will cover all exams, right? And at the end of every series, we will give free PDF copy. So if you like our efforts, please subscribe the channel, share it with your friends. Thank you all for listening. See you all in next lecture. Thank you.